Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This evening at Dev Talks, we're asking a big question. Can the Pakistani army save Pakistan? क्या पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान को बचा सकती है? There's a big question that we are asking, and we are asking this question to none other than Lieutenant General Syed Hasnain. Sir, good evening and welcome to the show. Good evening, Jai Hind, and thank you for inviting me for your show. A very, very important subject we are discussing today. Pleasure's mine, sir. Sir, the biggest thing that I want to ask you, and right at the beginning, I want to just dive right bang, smack bang into it by asking you one thing that I'm sure I know the answer, and every viewer that is going to watch the show knows the answer. Is Pakistani army the last bastion of Pakistan? See, Adi, there's no doubt that the armed forces are always the last bastion. And even in the armed forces, it's normally the armies which are the last bastion in every country, right? There are varying levels at which armed forces or the army controls affairs in every country. But famously, we all remember what you said about Pakistan and the Pakistan army, that most armies belong to a state, but Pakistan army owns the state, right? That's how the the world in generally looks at the Pakistan army. So the power of the Pakistan army is tremendous, right? From 1958 till 2023, it's progressively increased, meandered along. There were short periods in which power did get compromised. 6 years during the Bhutto period, for example. But by and large, once they decided that they would not want to really enter into government as such, the foreign policy, or may I say the security policy and the economic policy, ये दोनों जो हैं ये ये पाकिस्तान आर्मी ने ही चलाई हैं पाकिस्तान के अंदर. तो नॉर्मली अगर आप देखें तो आखिरी बेस्टियन, और इस स्थिति में अगर आप देखें तो इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर असर हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी पे असर हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे हो रहा है. तो तीनों चीजों की तरफ से अगर आप देखें तो ये तीनों कन्वर्ज करती हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और पाकिस्तान आर्मी का इंटरेस्ट इसके अंदर सबसे ज्यादा इंटेंस है. तो टू कट शॉर्ट द होल argument and debate here, yes, I definitely agree the Pakistan army is the last bastion. As I said, sir, that answer is pretty much understood by everyone. सबको पता है भाई ये तो लास्ट वो है. बट सर एक जो चीज हो रही है पाकिस्तान के अंदर जो दिख रही है इज दैट द करंट लीडरशिप इज नॉट रियली इन्वॉल्व्ड. इनका इतना दिल नहीं है पाकिस्तान के अंदर. दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि द आईएमएफ का दैट टाइटनिंग इज गोना हैपन. फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं डेली बेसिस. एक ना एक स्क्रीनशॉट इधर उधर घूमते रहते हैं. द प्रॉब्लम दैट आई एम सीइंग इज chaos, sir. अभी वो टीएलपी ने, आई थिंक आई शेयर्ड दिस विद यू आल्सो, सो टीएलपी ने बोला है भैया if you don't bring this down, we're going to be protesting in 48 hours or 72 hours or something. What that TLP the last time came into Pakistan brought Pakistan to a standstill. I'm not saying this is going to happen, sir, but chaos is due. How do you look at it? Tehreek-e-Taliban, Tehreek-e-Labaik Pakistan. Labaik Pakistan. Labaik Pakistan, that's the one. We get obsessed with Tehreek-e-Taliban Pakistan. But ये Tehreek-e-Labaik है. जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा. हिस्टोरिकली अगर देखें पिछले 4-5 साल में बहुत दफे ये हुआ है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी ब्लॉकेड करके गवर्नमेंट को वर्चुअली पैरालाइज कर दिया है तहरीक-ए-लाबाइक ने. बड़े हाई प्रोफाइल लीडर्स भी हुए हैं इनके, और अजीब किस्म की वो बात है पाकिस्तान के अंदर कि जब इलेक्शंस होते हैं तो ये पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो होते हैं ये इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं रहते हैं, इनके वोट्स के अंदर नहीं कन्वर्ट होता है ये सब कुछ. मगर जब ये आउटसाइड इलेक्शंस रहते हैं तो दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्चुअली पैरालाइजिंग पाकिस्तान. ये बड़ा एक स्ट्रेंज फिनोमेनन है पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने थ्रेटन किया है इस वक्त के, देखिए पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस को गिराइए. दिस इज ऑब्वियसली कंप्लीटली अपोज टू जो आईएमएफ डिमांड कर रहा है, क्योंकि आईएमएफ जो अगर लोन देगा अपना तो वो अपने पूरे डिमांड जो है वो रखेगा सामने. दे विल वांट के पाकिस्तान जो है वो अपने टैक्सेस को बढ़ाए, इनकम को बढ़ाए, और इनकम जो है अगर आप इमीडिएटली इनकम को ट्रेड के थ्रू नहीं बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट के
के थ्रू नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास जरिया सिर्फ रहता है टैक्सेस। तो टैक्सेस तो बढ़ाने पड़ेंगे आपको, और इसी का असर लोगों पर होगा, और सरकार जो है वो अनपॉपुलर होगी, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, तरीके लबाइक जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है उभरेंगे, और इसी से और टर्बुलेंस पैदा होता है। जैसे हम कहते हैं कि किसी तरह का इंटरनल इम्प्लोजन होने वाला है, तो मतलब यही होता है कि सरकार की जो का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल बहुत हद तक कम हो जाता है, और वो नहीं चाहते कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हों इस तरह की चीज में। जब आपने देखा 2-3 साल पहले, 2.5 साल पहले शायद, पाकिस्तान आर्मी जो थी वो नेगोशिएट कर रही थी तहरीक लबाइक के साथ। ये भी नहीं कि उनको हटाने का की बात कर रही थी, सफाया करने की बात कर रही थी, नेगोशिएट कर रही थी। वो भी अनपॉपुलर नहीं होना चाहते। पाकिस्तान आर्मी को भी जीना है, पाकिस्तान के अंदर रहना है, और उनके रैंक एंड फाइल जो है उसी जगह से आते हैं जहां से टेररिस्ट आते हैं। तो ये एक सोशल फिनोमेनन होता है जिसके बारे में ज्यादातर फौजें दुनिया में बड़ी सेंसिटिव होती हैं। दे रियलाइज that the same stock from which the terrorists come, the same stock from which in today's world the radicals come, उसी स्टॉक से आपके सिपाही भी आते हैं। तो ये ना हो कि उसकी इन्फ्लुएंस जो है अंदरूनी तौर पे फौज के अंदर इस तरह से आ जाए। और मेरे ख्याल में इस वक्त ये एक फिक्र बनी हुई होगी पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के अंदर, कि जो रवैया शुरू हुआ था 77 में रेडिकलाइजेशन का, उसका हमको मालूम है कि काफी हद तक उसका असर भी पड़ा था पाकिस्तान आर्मी पर, इंटरनल रैंक्स के ऊपर बहुत असर पड़ा था, मगर कुछ हद तक पाकिस्तान आर्मी ने उसके ऊपर कंट्रोल पाया था। मगर अभी जब एक छूट मिली हुई है और देश जो है पूरे तरह से कंट्रोल के अंदर नहीं है, इट इज अ फ्री फ्लोइंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो ऐसी स्थिति में और ज्यादा फिक्र हो जाती है। एंड सो आई एम श्योर द पाकिस्तान आर्मी इज वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस। Pakistan army is concerned, so that one thing we can see, उनका तो जो statements and जो उनका persona है, जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं, अभी जो जिस तरह के अभी जो नया आर्मी चीफ है, he is not visible that much. वो he is in foreign trips, pretty much I think उसने कोई 3-4-5 foreign trips लगा दिए हैं, which also tells me that पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक टेंशन है कि यार अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये ढीला हो गया तो हमारा तो गया, whatever our system is gone. So any organization, sir, वो जो self sustaining organizations होती हैं, which is what Pakistani army I think is, they want to sustain themselves, they want to keep themselves going, they want to be in power for as long as you know they can be. How will they survive, sir? Because the last option for anything of this army would be nationalism. Now TTP attacks are heavy. कल नाशनलिज्म के कराची ऊपर आर्मी चलती हैं। जी हाँ, जी हाँ, आगे 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 बताइए जी। सर टीटीपी का कल कराची में अटैक हुआ जबरदस्त. I mean that's what rumor is right now, but that's a fact that Karachi badly attacked. The next target for them is India. So by to show the world that boss we are in trouble, if you don't help us we'll go down. Would nationalism would be the other thing that the Pakistani army would be trying to raise up, sir? ये जरा आपको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, लास्ट बिट ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा हमारा फेड आउट हुआ था, थोड़ा No problem. कम्युनिकेशन। No problem, sir. My question to you is a very simple. Would nationalism, because there are two threats so-called to Pakistan. One is your western border, TTP वहां से, it's on, it's daily on. The fight is on. BLA, TTP, all these guys are hitting hard. The next would be India. So if the Pakistani army is able to, and India is a touchy chord within Pakistan. If anything starts up with these areas to create that nationalism fervor within Pakistan, which can be the only saving grace, sir, do you see that as a possibility of the army actually taking a step which is, I mean, silly and stupid at this time? आई थिंक इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा ये बताना पड़ेगा कि देखिए, पाकिस्तान आर्मी को आप बहुत आसानी के साथ कंडेम कर सकते हैं, बट
जब हम एक प्रोफेशनल लेवल पे इसको चीज को देखते हैं, ठीक है, हमारे लिए भी इट इज एडवर्सरीज आर्मी, जब प्रोफेशनल तरीके से देखते हैं तो आमतौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस इन यूनिफॉर्म होते हैं वो एक इथॉस बनाते हैं, अपने एक स्पिरिट बनाते हैं। बिना उस स्पिरिट के वो बात नहीं आती उस फौज के अंदर। नेशनलिज्म इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दैट। आई वुड से नेशनलिज्म इट इज पेट्रियोटिज्म एक्चुअली मोर देन एनीथिंग एल्स। थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म के बीच में फर्क है थोड़ा, बट पेट्रियोटिज्म इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिफॉर्म। और अजीब किस्म की चीजें होती हैं। अब आप देखिए, कश्मीर में देख लीजिए, हमारे एक जवान जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का, वो छुट्टी पर जाता है तो गांव में देखता है टेररिस्ट भी हैं, वहां पर मदरसों के अंदर या मस्जिद के अंदर एंटी नेशनल चीजें भी हो रही हैं और एंटी नेशनल बातचीत हो रही है, ऐलान हो रहे हैं, और ये अकेला आदमी जो है इसको वहां पर रहना है, जीना है, इसके परिवार को जीना है। ये दो दुनिया में रहने की आदत बना लेता है। छुट्टी पर छुट्टी से वापस आएगा, इज बैक इनटू हिज मोल्ड, is back into his mold. This normally happens in most internal conflict situations of this kind. And that is why people get worried sometimes कि भाई ये कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए इसके ऊपर। मगर मोस्ट आर्मीज नो यूनिट, जो यूनिट एक एंटिटी होती है, जो एक स्पिरिट होती है, रेजिमेंटेशन जो होता है, वो इसी को बनाए रखता है। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। You may belong to any faith, you may belong to anything, you may belong to so and so village। आपके गांव में कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, आपको बुलाया जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, आप दिल से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसे ही जाते हैं वहां पर, वापस आते हैं, यू आर बैक इन योर मोल्ड, यू आर बैक इन यूनिफॉर्म एंड यू आर अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर। ये दोगली दुनिया, कभी कभी जिसको आप कहते हैं, ये दोगली दुनिया चलती है, और मोस्ट सोल्जर्स लर्न टू लिव विद दिस। यही पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा होगा। जब फ्रंटियर फोर्स वाले जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा, वो देखते होंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट भी घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है। हमारे पास यहाँ खबरें नहीं आती हैं टारगेटिंग ऑफ लोकल आर्मी मैन ऑन लीव एटसेट्रा, ये खबरें हमको नहीं आती हैं, बट शायद होती होंगी वहां पर भी। बट दिस इज अ मेजर चैलेंज फॉर एनी फोर्स। तो पाकिस्तान आर्मी, अगर आप मुझसे पूछें कि इस स्थिति में and with all this radicalization which has taken place, क्या कोई फर्क पड़ा है पाकिस्तान आर्मी के अंदर? मैं जरूर ये कहूंगा कि पाकिस्तान की बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इन पे बेशक इस पर असर पड़ा है। मुमताज कादरी वाला असर पड़ा है। लेकिन आपको याद है मुमताज कादरी जो असैसन था सलमान तसीर का, द गवर्नर ऑफ पंजाब, वो असर पड़ा है इनका। मगर फौज पर जहां तक मेरा अंदेशा है, जहां तक मेरे डिस्कशंस हुए हैं बहुत से नॉलेजेबल ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी के, एंड विद मेनी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, आई डोंट थिंक द पाकिस्तान आर्मी हैज बीन डीपली अफेक्टेड इंटरनली दैट मच, एंड देयरफॉर द रन ऑफ पेट्रियोटिज्म प्रॉब्ली इज स्टिल प्रेवलेंट इन देम। अब कितनी हद तक वो चलता है, अगर आप देख रहे हैं कि आप फौजी हैं और आपका के घर के अंदर, गांव के अंदर खाने पीना नहीं है, प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव गॉन अप टू स्काई रॉकेटिंग रेट्स एटसेट्रा, तो आप भी जरा, आपको इफेक्ट होगा इसका। क्या ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक साथ होगा which will lead to some kind of a trigger by which you will find the armed forces coming apart? I think it's a little too early to say. A little too early to say for Pakistan yet, because देखिए एक बेसिक क्वेश्चन रहता है, क्या दुनिया पाकिस्तान को बिखरने देगी? ये बात है, क्या बिखरने देगी? सबको मालूम है न्यूक्लियर हथियार है उनके पास, सबको मालूम है 6.5 लाख की फौज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को छोड़िए, पुलिस को छोड़िए। ये भी मालूम है सबको कि अफगानिस्तान के अंदर चलने से जाने से पहले अमेरिकन जो है उन्होंने 6 लाख हथियार छोड़े थे तकरीबन, वो भी मॉडर्न वेपन्स छोड़े हैं वहां पर। क्या आप चाहते हैं कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज इस तरह से बने, जो अवेलेबल हथियार इस तरह से उस पैक रीजन के अंदर है, इन दोनों का मेल हो एंड इट क्रिएट्स अ तहलका बन जाए पूरी दुनिया के लिए? मैं समझता हूं कि
world polity is a little smarter. Most people do not want this to happen, and nations around the world are careful about it. So even as you and I are talking, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, कुछ ना कोई बैकग्राउंड में इसके ऊपर काम कर रहा है to prevent this from happening. And I think still that पाकिस्तान को रिट्रीव करने के लिए बहुत चालें चली जा रही हैं, बहुत चालें चली जा रही हैं, जो हमको शायद अभी तक यकीनन मालूम नहीं है, मगर एवरीथिंग इज बीइंग टेकन टू इन टर्म्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, लास्ट पॉइंट तक ले जा रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, और आप देखिए कुछ ना कुछ लोन उनके हाथ आएगा एटसेट्रा, विच विल प्रिवेंट पाकिस्तान फ्रॉम गोइंग ओवर द टॉप. फिर मगर ये आएंगे दोबारा 24वें 25वें 30th IMF लोन के लिए भी आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान is one nation which doesn't learn its lessons easily. It's got a civil society, intellectual civil society, lots of effective, good thinkers. But for them to get their act together and contest against the army becomes extremely difficult. और हम समझें कि आर्मी हर वक्त जो है सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ही देखती रहेगी, मैं समझता हूँ ये शायद सच ना हो, क्योंकि बहुत हद तक पाकिस्तान की जो आर्मी की लीडरशिप जो है वो ज्यादातर सेल्फ इंटरेस्ट देखती है, पहले सेल्फ इंटरेस्ट देखती है, उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट देखती है. तो इस स्थिति में वो सेल्फ इंटरेस्ट किस हद तक जाता है, दैट विल डिक्टेट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. One can only, I mean, self-preservation, if I may, sir. You said self-interest. Can I add self-preservation in that? सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन के साथ लिंक्ड होता है, हाँ. बिल्कुल. ये So तो that's something. इसकी टॉप लीडरशिप and not, it's not Pakistan Army alone. We know that there are linkages with different elements of Yeah, civil yeah. society, हाँ. etc., political leaderships, etc. हालांकि on paper they may be fighting against each other and things like that, but That is only. पीछे बैकग्राउंड में क्या है वो दूसरी दुनिया होती है कंप्लीटली. जी, तो वो जी. वहां पर कुछ और चल रहा है, वहां नेगोशिएशन चल रहे होंगे, गिव एंड So टेक हो रहा होगा. you mentioned, and Ukraine-Russia war के चक्कर में the Seymour Hersh currently became popular. So it came into my mind. I started reading what he had written about Bin Laden, the kind of favors that the US was doing for Pakistan. The जो बोलते हैं ना military to military contacts थे, they were not government. They were all off the books. Yeah, you want this done, I'll get it done. Next जहाज आ रहा है, I'll send it to you. To a point, they were sending the army chief of Pakistan to play golf in California. You know, the works, the good life. So he's written about all this stuff, and I kind of read some stuff here and there, which is what brings me to the next question. You said कि बहुत चालें चल रही हैं उसको बचाने के लिए. The only one who's capable enough to बचाओ him is the United States. There's literally no one else. China तो, I mean, Yeah, आपने बहुत सही चीज, you have touched a very raw nerve. This is an absolutely correct now statement. tell me what's up with this, sir. Let's talk about the United States. ये आउट ऑफ द ब्लू देखिए, अफगानिस्तान से हटकर जब अफगानिस्तान से विड्रॉल भी हो गया, 6 महीने 7 महीने 8 महीने के अंदर $450 million की डील टू रिफर्बिश दी F-16s आउट They're ऑफ द on the ब्लू. they're on the क्या पाकिस्तान ने Ukraine मांगा team. भी था? क्या मांगा भी? मुझे तो शक है पाकिस्तान ने मांगा भी नहीं था उस वक्त. पाकिस्तान के शायद दिमाग में भी नहीं आया होगा ये कि ये, बट द अमेरिकन्स वर विलिंग. एक तो देयर इज नो डाउट कि इट बूस्ट अप द अमेरिकन इकोनॉमी. अगर 470 एयरक्राफ्ट खरीदता है एयर इंडिया और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है 40 स्टेट्स के अंदर, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो आई कैन इमेजिन हाउ $450 million also it can create a variety of jobs. एयर इंडिया की डील तो $85 billion की है, मगर ये $450 million की भी काफी बड़ी डील है अगर आप देखें कंपेयर टू पाकिस्तान साइज. तो आउट ऑफ द ब्लू दीस सरप्राइज थिंग्स हैपन. इसी अगर आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि अगर इंडियन आर्मी का ऑफिसर और पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर साथ साथ खड़े हुए हों यूनाइटेड स्टेट्स में किसी इंस्टीट्यूशन में, और कोई अमेरिकन ऑफिसर आए, तो सबसे पहले वो हाथ मिलाएगा पाकिस्तानी के साथ. He will not shake hands with an Indian. That's a symbolic idea to tell you
फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, आप जितनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जितनी बातें करें, एक हिस्टोरिक लिंकेज है, सीटो सेंटो से लिंकेज चला आ रहा है इनका. एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इट मे नॉट बी सो मच, बट आर्म्ड फोर्सेस टू आर्म्ड फोर्सेस, मेरा ये एक्सपीरियंस है, तजुर्बा मेरा यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस ऑलवेज फेवर्स द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस. और समाव वो समझते हैं कि शायद थिंकिंग भी उनकी कॉमन है या जो भी है, बट दैट इज द प्राइम थिंग. एंड they will not want to see the Pakistan army, or Pakistan, first of all, they don't want to see Pakistan implode. They don't want to see the Pakistan army getting broken up in any way, weakened in any way, because they feel that in this area, if there's any organization which is available to uh, take care of American interests, it is the Pakistan army. It is pliable, it is corrupt, it is effective. एक तो होता है करप्ट है, प्लायबल है, एंड देन यू आर नॉन प्रोफेशनल. ये करप्ट भी है, प्लायबल भी है, प्रोफेशनल भी है, केपेबल भी है. जब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है एंड यू हैव अ सुपर पावर लुकिंग फॉर इट्स इंटरेस्ट, यू ऑब्वियसली नीड समथिंग लाइक दिस, एन एंटिटी लाइक दिस. एंड देयरफॉर पाकिस्तान आर्मी इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड यू विल फाइंड all kinds of linkages between the two taking place from time to time. Most of them you will hardly get revealed. ऊपर नहीं आएंगे, they will never come to the surface. You won't be able to even see them, visualize them. But ये नीचे under the surface चलता रहता है हर वक्त. You've touched upon something which I think पाकिस्तान में इसके बारे में बात करना I don't think will be allowed, because it will reveal a lot of secrets जो comfortable नहीं होंगे for the establishment, as they say, because they want to kind of foresay that they are independent, natural, they're strong themselves and stuff like that. They don't have the kind of support that you've kind of spoken about the West. So, मेरा एक आखिरी सवाल है before we get into the questions. So, guys, please write, ask, in the hashtag ask on the questions so that I know questions, because आपके भी आपस में audience, you guys keep commenting on each other's this thing as well. My last question to you is, sir, is now, it's hypothetical, it's philosophical, to a large extent, it's more to do with the definitions. Now, we've had a discussion on this channel where we've tried to understand, sir, what is a failed state and what is a failed nation. Pakistan failed as a nation in 1971 when it broke up. The USSR failed as a nation when it broke up in 1990, 1991. Pakistan, to me, is a failed state, but not a failed nation. What we always talk about is Pakistan going over the edge. हम लोग बोलते हैं भाई डिफॉल्ट हो जाएगा तो वो दूसरी तरफ चले जाएगा. Now the definition of दूसरी तरफ चले जाएगा is क्या, sir? Is it a divided inside Pakistan? Somebody's written an article and I've shared it with you also, is the Lebanization of Pakistan. कि अंदर सब सेपरेट है, बाहर से एक कंट्री है, they are holding together somehow or the other. Chaos, there's that in the other, but whatever it is. How feasible do you think is an option where Pakistani army literally decides, यार, this is my core control area, इसको मेरे को पकड़ के रखना है, बाकी fair enough, let it happen, whatever happens. That's the final outcome of Pakistan, if I may say so. But the land boundaries remains the same. No separatist takes charge, because hey, there are still opposing forces. Would that be a possibility that you can see happening in the future? Interesting hypothesis what you have given out, Adi. But I do believe that is not strong enough. There was a time when the Pakistan civil society was fairly strong. 1968 में अयूब खान को गिराने के में सिविल सोसाइटी का रोल सबसे ज्यादा बड़ा था. हालांकि यहिया खान उसके बाद आ गए थे, मगर आज अगर हम कहें कि सिविल सोसाइटी जो है वो एकजुट होकर और पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल को नकारा कर सकती है, ओवरथ्रो कर सकती है, तो मैं जरा इसको बड़े सस्पिशन के साथ इसको ऐसे स्टेटमेंट को देखूंगा.
There are divisions within, एंड यस फेल्ड स्टेट के तौर पे सबसे बड़ी चीज जो हुई है पाकिस्तान के अंदर वो ये है गाइड इस इकोनॉमी इन द करेक्ट वे एंड टेक इट टू अ हायर लेवल. अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो यू नीड टू टेक इट टू अ हायर लेवल. एंड द सेकेंड थिंग इज द इनएबिलिटी टू मेंटेन योर इंटरनल सिक्योरिटी. Sir, बाकी भूल जाइए अफगानिस्तान I, को. या I'm बोलिए sorry, बोलिए. we missed the first point because your voice got cut. So if you could just tell us the ओके jinx of the first point. ओके ओके. दो चीजें हैं. सबसे पहली चीज है इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड. यू सी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशन. अगर आपकी इकोनॉमी ही गिर गई, आपकी इकोनॉमी जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही है, यू हैव कम डाउन टू योर लास्ट लेग्स एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, तो ऑटोमेटिकली आपकी सिक्योरिटी ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज हो गई. तो एक तो होती है इकोनॉमिक्स के ऊपर, और दूसरा इनके लिए खास तौर पे है इंटरनल सिक्योरिटी. क्योंकि इफ यू रियली सी इट, इनका सबसे बड़ा चैलेंज अफगानिस्तान नहीं. अफगानिस्तान तो अब दोबारा वापस आ रहा है इनके लिए प्रॉब्लम. भारत भी नहीं इतना. और भारत दे ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट इंडिया डज नॉट मीन any business of going to war with Pakistan at a trigger caused by India itself. बहुत ही रेयर चीज होगी कि भारत इस तरह की चीज करेगा. भारत का मुद्दा क्लियर है भाई, 2035 हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे. इतनी बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए हमारी कि हम ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स के जरिए किसी एडवर्सरी को मात दे सके. ये हमारा हमारा मुद्दा होना चाहिए. और पाकिस्तान के अंदर अलग है, क्योंकि ये डिसेंशंस हैं इतने अंदर ऑलरेडी, रेडिकलाइजेशन इतना ज्यादा एम्बेड हुआ है, और आर्मी जो है वो हेल्पफुल नहीं है. इफ द आर्मी वाज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेरी कंडूसिव टू गवर्नेंस, दैट वुड हैव बीन आइडियल. पाकिस्तान आर्मी हैज फेल्ड टू डू दैट. इट हैज फेल्ड टू डू दैट. ये सब जब इस्लामाबाद का ब्लॉकेड चल रहा है, ये सब हो रहा है, इसमें हम देखते हैं क्या शेनानिगन्स प्ले करते हैं. All the time they are involved with negotiations and this and that. अरे अगर आप आर्मी है भाई, आपका नेशनल कैपिटल जो है वो ब्लॉकेड हुआ है, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है. एक वार्निंग दो, दो वार्निंग दो, तीसरी वार्निंग पर हटाओ इनको. ये नहीं करते. ये नहीं करते क्योंकि समझते हैं कि इसका असर कहीं पाकिस्तान आर्मी के अंदर ना हो जाए, क्योंकि they themselves created that problem for themselves inside the Pakistan. तो दे आर इन ये बड़े अजीब किस्म के प्रॉब्लम में है, which is very difficult for people from outside to understand. Right? It's only my understanding is only through my talks with people. पाकिस्तान के लोगों के साथ कहीं बात कर ली, कहीं मिले इंटरनेशनली, कहीं मिले उनके साथ बात किया, और पाकिस्तान मीडिया के साथ को पढ़ने से. पाकिस्तान मीडिया, आई मस्ट अप्रिशिएट द पाकिस्तान मीडिया. आर्टिकल्स जो पाकिस्तान के अंदर से आते हैं, डॉन में आते हैं, आउटस्टैंडिंग आर्टिकल्स, जस्ट लाइक द इंडियन मीडिया. इंडियन मीडिया जबरदस्त है हमारा, प्रिंट मीडिया खास तौर पे. अब ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी तरह से है, भारत में तो वैसे ही है, पाकिस्तान के अंदर भी काफी उभरा हुआ है. मगर देखते हैं कि जिस तरह की चीज प्रिंट मीडिया निकालता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान के अंदर शायद नहीं निकाल पाता है. तो ये सब कहने के बाद मैं तो ये कहूंगा कि I am only hopeful. Again, I continue repeating this. I am only hopeful that the last stage will not be reached, because I do not want to see an imploded Pakistan. Lots and lots of people have criticized me. I've debated with people. सब कहते हैं कि आप बहुत फेवर करते हैं कि भाई पाकिस्तान स्टेबल रहे. मैं कहता हूँ बिल्कुल. I don't want to see instability on my doorstep, because इसकी जो इम्पॉन्डरेबल्स होते हैं वो लोगों को समझ नहीं आते हैं. वो समझते हैं इसके मिलिट्री इंप्लीकेशंस क्या होंगे. पाकिस्तान तो इतना कमजोर हो जाएगा कि कोई मिलिट्री इंप्लीकेशन नहीं है. पाकिस्तान आर्मी तो बंटवारे में 4 हिस्से में हो जाएगी, वो आर्मी भी नहीं कुछ कर पाएगी. डोंट बैंक ऑन दीज थिंग्स. ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं, और इनके अंदर जब ये शुरुआत जब होती है इसकी, तो ये कैस्केड ऑफ सच इवेंट्स which only creates more and more negativity. We don't want that on our doorstep. We don't want that coming into our country. हमारा मुद्दा क्लियर है, जो मैं हर दफे रिपीट करता रहता हूँ. 2035 गवर्नमेंट ने कहा है, सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, भाई we are working for the upliftment of the Indian people.
वी वांट टू अपलिफ्ट पॉवर्टी, वी वांट बेटर डेवलपमेंट, हमको अच्छी ट्रेनें चाहिए, हमको 470 एयर इंडिया के हवाई जहाज चाहिए। ये सब चीजें पाकिस्तान कहाँ ड्रीम कर सकता है? ये कहाँ ड्रीम कर सकता है? 1991 में हम भी नहीं ड्रीम कर सकते थे। बट वी हैव गॉट आवर एक्ट टुगेदर। देयर मे बी डिविसिव पॉलिटिक्स इन इंडिया, but at the It's end of the day, I think the good of India is always at the back of the mind of the Indian political community, the bureaucratic community, the armed forces community, anyone you say. ये पाकिस्तान में नहीं होता सब। They are at different levels. Connivance कुछ हद तक political community और आर्मी का होता है कुछ हद तक, मगर आर्मी ज्यादा डोमिनेट करती है, सिविल सोसाइटी का कोई रोल ही नहीं होता इसके अंदर। तो at the end of the day today, I think Pakistan will pull through again. My only worry is कि इस process में, and if this process elongates, I don't want to see a situation where the Pakistan army, which is branded as a rogue army by many armies, by many organizations of the world, it does not on its own initiate something negative on the borders, on the India-Pakistan borders, for the sake of diversion of attention from all that is happening inside Pakistan. And this is a very, very usual thing. जब किसी देश के अंदर अंदरूनी वो टर्बुलेंस होता है तो एक तरीका होता है इसको डाइवर्ट करने का, अटेंशन है कि नेबर के साथ कुछ ना कुछ शुरू कर दो। क्योंकि ऐसा शुरू हुआ तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भारत के अंदर भी सेंटिमेंट्स बहुत इंटेंस हैं। And Pakistan is probably does not realize, okay, or it may be thinking that we got two adversaries to look at, China and to look at Pakistan. But I think overall, अगर ऐसी स्थिति आई, हमारा फोकस पाकिस्तान की तरफ गया, I don't think China will want to interfere in a thing like this, and it will be a very dangerous situation for Pakistan. yes, sir. Yes, sir. I mean, absolutely. मैं आपसे, I mean, I agree with you so much कि हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान को टूट जाना चाहिए. As a Indian, I think that will be a pleasure that all of us will see. But उसके बाद क्या होगा उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, because that is something which is going to be, मतलब 22 करोड़ लोगों का क्या करोगे? एंड अगर आप अपने आप को Exactly. सुपर पावर बुलाते हो तो पूरी दुनिया बोलेगी अच्छा ठीक है, हम इनके न्यूक्लियर बॉम्ब हटा लेते हैं, खिलाओ इनको। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये वी विल, हमारे जो कमेंट्स हैं, ये जो हमारा वार्तालाप, डिस्कशन, डिबेट हो रहा है, इसके ऊपर बहुत लोग चर्चा करेंगे। एंड दे आर ऑफ कोर्स इंडिया में तो ये तो बहुत अच्छी प्लीज। चीज है कि हाँ जी। you're free to debate what you wish, but a lot of people will have this kind of an informed opinion कि it's good for India's national security if you see the end of Pakistan. It's at the end of Pakistan. It doesn't. Pakistan is not something which can vaporize. पुफ होकर हवा में चला गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। 200, आपने सही कहा, 22 करोड़ लोग हैं, एसेट्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं, कहाँ जाएंगे ये सब? I mean, vaporization is dreamland. I think it's beyond dreamland, sir. Let's get into some audience questions, sir, and see what they have to say. So, guys, please do, like the video. That's pretty critical. Reach a nice big audience, especially with our friends in Pakistan. We do have respectful discussions. Very There good. is, Glad that a lot of people from Pakistan are listening, and हाँ, I'm careful with my words. I do not want to convey anything negative. We want to see the good of this whole subcontinent. We want to see the subcontinent rising together. I hope you can set aside all these unnecessary, issues between our nations, etc., and look to progress. That's how we should be viewing the world. 111 Brigade. Incidentally, thank you, sir. Whoever, your very interesting name for your contribution. He says Pakistan Army, like every institution that corners maximum resources of a state, will remain united to protect their interests at all costs. Has the DPRK regime folded despite seeing huge famines and isolation? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और 111 ब्रिगेड, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है क्या है 111 ब्रिगेड, 111 ब्रिगेड पाकिस्तान का कू डेटा ब्रिगेड है। ठीक है, दिस इज द कोर रिजर्व, दिस इज द रिजर्व व्हिच स्टेज एट रावलपिंडी। मुझे तो मालूम है क्योंकि मैं जोसी 15 कोर रहा हूँ इंडियन आर्मी का, और सबसे पहले जो है, अब कुछ भी दुनिया में होता है सबसे पहले 111 ब्रिगेड पहुंच जाता है कश्मीर पे।
अ, पाकिस्तान का। तो ये बड़ा दिलचस्प वो सवाल है। सही बिल्कुल आपने कहा कि भाई पाकिस्तान आर्मी जो है जब उसका कंट्रोल है तो मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। अब ये भी तो नहीं है कि 50% ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन अप बाय द डिफेंस बजट, ऑब्वियसली नॉट। आई मीन देयर इज अ सेंस ऑफ रैशनल, बट डेफिनेटली फ्रॉम ए फ्रॉम ए रेशियो प्रोपोर्शन एंगल का प्रोपोर्शन से देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी takes a bigger, much bigger chunk of the budget. Whether the issue of will it remain united, यही तो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जब देश के अंदर तहलका, मुल्क के अंदर तहलका मचा हुआ है, जब रिसोर्सेज का की इतनी कमी है, जब पेट्रोल और गैस नहीं मिल रही है, जब ब्रेड अंडे और मक्खन नहीं मिल पा रहा है, तब क्या वो यूनिटी रहेगी? कि will the pull of regionalism also take away the Pakistan Army regiments? Today I don't know which are the 3 units of 111 Brigade. अज्यूम करता हूं मैं कि एक फ्रंटियर फोर्स की यूनिट है और एक सिंध रेजिमेंट की एक यूनिट है और एक पंजाब रेजिमेंट की है। क्या ये 3 यूनिटें एक साथ रह सकती हैं? कि will they go in 3 different directions looking for the interests of their people? ये सवाल है। और बड़े अक्यूट सिचुएशन जब होते हैं इस तरह के, जब रिसोर्स की कमी होती है, कंप्लीट डेarth ऑफ रिसोर्सेज, तब लोगों का रवैया बदल जाता है। द साइकी ऑफ पीपल चेंजेस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर ऑफिसर्स इन रेजिमेंट्स। ये एक दिलचस्प चीज ऑडियंस को याद रखना चाहिए। द पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी ऑफिसरिंग पैटर्न इज एग्जैक्टली द सेम। याद रखिए, सिंध रेजिमेंट में सिंधी होगा, पंजाब रेजिमेंट में पंजाबी होगा, ऑफिसर कहीं का भी होगा, ऑफिसर तो कहीं का भी होगा। मैं यूपी का रहने वाला हूं मगर आई बिलोंग टू गढ़वाल राइफल्स। कितने हमारे साउथ इंडियन ऑफिसर्स हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के, जो सिख रेजिमेंट में है और पंजाबी बोलते हैं बेटर देन मोस्ट सिख्स। ठीक है, तो ये रेजिमेंट, क्या ये ऑफिसर रेजिमेंटेशन जो है, कैन दिस कंट्रोल एंड होल्ड the units together in the Pakistan Army? ये मजेदार चीज होगी डिस्कस करने की। I mean, there's a comment which probably is a more emotional than anything else. First and foremost, Jai Bharat, Jai Punjab. Thank you so much. Pakistan Army is 70% Punjabi, not national. टूटेगा ही। भाई डेफिनेटिव चीज तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कहता हूं स्ट्रेट अवे। मुश्किल है। मैं रैशनल देखता हूं, रीजनिंग देखता हूं। आप सीधा बस एक स्टेटमेंट देंगे टूटेगी ही, नहीं भाई, ये तो अनफेयर चीज है। आप जरा अपनी रीजनिंग दीजिए, अपने रैशनल दीजिए। हमने तो पिछले 25 मिनट, आधा घंटा यही डिस्कस किया है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो प्रोफेशनल है और नो डाउट इसके ऊपर प्रेशर बहुत आएगा। जब रिसोर्स की कमी होती है तो प्रेशर तो बहुत आएगा, मगर शायद स्टैंड कर ले, क्योंकि पावर ऑफ रेजिमेंटेशन है उसके अंदर। कलर ऑफ द बेरे, कलर ऑफ द बैज, लैनियार्ड पहनी हुई है, रेजिमेंटेशन जो समझता है। अगर आप फौजी हैं आप समझेंगे इसको, ठीक है, आप समझेंगे इसको। मैं समझता हूं, मैं अपने आप को यूपी वाला नहीं कहता हूं, मैं पहले अपने आप को गढ़वाली कहता हूं। भाई मैं गढ़वाल राइफल्स का हूं, मैंने गढ़वाल के सेक्शन से लेकर यूनिट कमांड की है, उसके बाद बाकी जो कुछ कमांड किया है आर्मी में वो अलग है, मगर सेक्शन से लेकर यूनिट तो मैंने कमांड की है। और रेजिमेंट का मैं कर्नल रेजिमेंट भी रहा हूं, तो इसलिए आई अंडरस्टैंड द होल एस्पेक्ट ऑफ रेजिमेंटेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बट इट कैन, इन द केस द सिचुएशन इन विच पाकिस्तान इज टुडे, इट कैन गो हेवायर। बिल्कुल अलग हो सकता है ये, उसी को हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है कि नहीं। मेरे ख्याल से इस वक्त अभी जरा मुश्किल है कहना कि ऐसी चीज हो सकती है। 111 Brigade again says, thank you so much for your contribution once again. At any point of time, there is about 100 to 150 analysts, scholars in US keeping tabs on what is happening in Pakistan across various think tanks, universities, intelligence agencies, US Army, CENTCOM, and lobbying firms. आगे नहीं कहा कुछ उन्होंने, That's probably his comment. तो बड़ा 100 to 115 तो बड़ा आपका बड़ा
कंजर्वेटिव फिगर है जनाब। मैं तो कहूंगा 1000-1500 लोग होंगे भारत के अंदर ही, 1000-1500 लोग होंगे जो इस वक्त आपके ऊपर टैब्स रख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट ए सिंपल थिंग, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट फैसिनेशन फॉर अस टू अंडरस्टैंड। मैं तो दिन रात पढ़ता हूं आपके बारे में, ठीक है। आई गेट इनटू योर माइंड, आई अंडरस्टैंड योर माइंड। वही तो भाई भाई आफ्टर ऑल मिलिट्री प्रोफेशन से यही है। सिर्फ हथियार चलाने से थोड़ी होता है मिलिट्री प्रोफेशन। मिलिट्री प्रोफेशन होता है दिमाग लगा कर समझना, आपने अपने एडवर्सरी की के दिमाग को समझना। तो इसलिए पढ़ते हैं लोग। और क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव इम्प्लीकेशन, देयर इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन टू द पाकिस्तान आर्मी, तभी लोग पढ़ते हैं ज्यादा। कोई इंडियन आर्मी का इतना पढ़ता है? इंडियन आर्मी का शायद चाइना वाले पढ़ रहे होंगे बहुत, शायद पाकिस्तान में कुछ लोग पढ़ते होंगे कभी इधर उधर, मगर जिस इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तान आर्मी को पढ़ा जाता है, पाकिस्तान आर्मी इज इन्वॉल्व विद एवरीथिंग। ब्रेकफास्ट सीरियल भी आप ही बनाते हैं, ठीक है, वार्म वेस्ट भी आप ही बनाते हैं, और फिर लड़ाई भी आप लड़ते हैं, एम्युनिशन भी बनाते हैं अपना। मैं तो कोई पाकिस्तान की कोई चीज ही नहीं है जो आप नहीं करते। क्या आपने सुना है कभी इंडियन आर्मी करती है ये चीजें? हम भाई प्रोफेशनल हैं, अपना काम करते हैं। Akshay, thank you so much. He says, can the Taliban create a mutiny in the Pakistani army using radicalized officers and other elements in the army to capture power while still continuing the low intensity conflict that is ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपने बड़ा सोच विचार करके ये सवाल पूछा है, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है इज ऑन द गेट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान हैज फॉलन आउट विद द अफगान तालिबान। डुरान लाइन के ऊपर भी प्रॉब्लम्स हो गए हैं। तालिबान इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द डुरान लाइन एज इट इज। उस फेंस जो बनाई है पाकिस्तान ने, उस फेंस को भी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अफगानिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको बड़ी ग्रजिंगली अभी तक अफगान तालिबान ने सपोर्ट नहीं किया था अभी तक पहले, उनको अब वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। और धीरे 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 ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान अंदर घुस रही है। वेस्टर्न एरियाज से वो धीरे धीरे अंदर घुस रहे हैं। अब कराची में हुआ है, इससे पहले पेशावर में हुआ था। तो वक्त की बात है, थोड़े दिनों के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर के अंदर कहीं भी। तो यस, क्या जो ये इन एरियाज में हो रहा है, क्या इसी तरह की चीज क्या पाकिस्तान आर्मी के अंदर कर सकते हैं? एक चीज बस इन फेवर ऑफ पाकिस्तान आर्मी मैं कहूंगा, 2014 से 2018 तक ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया था। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पाकिस्तान इन्फेंट्री ब्रिगेड्स, आई एम अवेयर ऑफ, आई कांट रिमेंबर अदर डिटेल्स, मगर आपके इन्फेंट्री ब्रिगेड्स जो थे ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ देम वे डिप्लॉयड इन इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज। यहां तक कि कश्मीर से भी कुछ आपने ट्रूप्स हटा दिए थे वहां पर। वो तो हम बड़े अच्छे दुश्मन हैं आपके कि हम कुछ करते नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है। हम तो कश्मीर में आराम से सीज फायर करके सीज फायर लाइन पे बैठते हैं और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, प्रिवेंटिंग इन्फिल्ट्रेटर्स कमिंग इन। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है वहां पर इस तरह की, मगर आप ही चाहते हैं, आप ही इस तरह की शेनानिगन्स करते रहते हैं प्ले, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पे आप ही कमजोर होते रहते हैं। अब रेडिकल्स को लाना और उनको पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जगह देना, isn't it playing with fire, right? It is the whole thing has come back. वो हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा था, अगर आप सांप पालेंगे अपने बैकयार्ड में तो ये तो नहीं हो सकता कि आपको नहीं काटेंगे वो सांप। वही तालिबान आप ही को काट रहा है, तरीका लबाएगा आप ही को थ्रेटन कर रहा है, आप ही की आर्मी को थ्रेटन कर रहा है। But at the end of this little discussion, I would still say कि मेरे ख्याल में अभी भी पाकिस्तान आर्मी काफी प्रोफेशनल है, और they will, I'm sure they will get their act together to prevent this from happening. नीचे के लेवल पे शायद ज्यादा परमिएट हो गया, आइडियोलॉजी में हैव परमिएटेड। ऊपर के लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे ये कम देखा जाता है। आई हैव served with Pakistan Army officers, I know Pakistan Army officers, and मुझे यकीनन मेरी समझ में ये है कि ये प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम। I mean, इसको डिनाई करना कि ये प्रॉब्लम नहीं है would be
सैक्रिलेज है प्रॉब्लम, मगर इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कभी कभी हम इसके बारे में बात करते हैं. अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, रिसोर्स क्रंचेस एटसेट्रा, ये हो सकता है कि सिविल सोसाइटी का जो टर्बुलेंस है वो थ्रू दीज एलिमेंट्स ट्रेवल्स इनटू द आर्मी. अगर ऐसा होता है, then the Pakistan army is got a challenge on its hands. Societal challenges, yes sir. Yeah, That is, I mean, जिसकी आर्मी में ठीक है, ही सॉर्टेड आउट, बट उसके घर में उसकी बीवी बच्चों को या माँ को absolutely, बाप को खाना absolutely. नहीं मिल रहा है, that will hurt. बिल्कुल So बिल्कुल बिल्कुल. और आजकल that की दुनिया में मोबाइल टेलीफोन, अब पहले तो ये होता था जब मैं श्रीलंका में था ना आदि साहब, जब मैं श्रीलंका में था 1988 89 90 में, तो मेरी पत्नी का की चिट्ठी आती थी 6 हफ्ते के बाद पहुंचती थी मेरे पास. उस तब तक प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, जो घर में प्रॉब्लम है कुछ है, ठीक है. कभी फोन पे बात नहीं कर सके हम, सालों वहां रहे मगर कभी फोन पे नहीं बात हो सकी थी. मैं यूनाइटेड नेशंस में था, रुवांडा में रहा, तो मैं ऐसी जगहों पर हूं, तो रुवांडा से 6 महीने तक कोई फोन ही नहीं कर सके हम वहां से. और इतना महंगा था, $16 पर मिनट, $16 पर मिनट वहां पर टेलीफोन करना. तो आजकल की दुनिया को देखिए, सोशल मीडिया, वो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप टेलीफोन ही है, वीडियोस हैं. अरे दुनिया भर आप खबर फैलाना, इंफॉर्मेशन तो आपके फिंगर टिप्स पे. तो अगर आपने टर्बुलेंस फैलाना है आर्मी के अंदर, हार्डली एन इशू, इज नॉट हार्डली अ चैलेंज. The army, Pakistan army will have to be very, very careful. They are very good at information warfare. Incidentally, they'll have to be very, very careful to learn how to counter it against themselves. क्योंकि अगर terrorist organizations start playing into this whole game of information and radicalization very deeply to target the Pakistan army, there's nothing stopping it. After all, ISIS, की अगर आप वेबसाइट देखते, अगर आइसिस का मैगजीन देखते, द बीक, तो यू वुड हैव बीन सरप्राइज्ड हाउ प्रोफेशनली मैनेज्ड इट वाज. yeah. क्या प्रोफेशनल ग्लॉसी मैगजीन बनाया था So उन्होंने. the और टेररिस्ट BLA press ऑर्गेनाइजेशन का नाम releases, था. जी the बिल्कुल BLA press releases, proper fonting, spacing, everything. बिल्कुल I read them and I'm like, yeah, some guy sitting there with a computer and doing a damn good job, whatever said and done. एब्सोल्युटली. I mean, सुपर रुस्तम है, बहुत से बैठे हुए हर जगह. Venki sir says, General Hasnain sir, how come the cake-eating gentry seems to be completely untouched or insulated from what's happening around in their country? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये सवाल बहुत दफे मेरे दिमाग में भी आता है, डिस्कस भी करता हूं मैं बहुत लोगों के साथ, कि पाकिस्तान के अंदर एक क्रीमी लेयर तो है ही. वो तो हमको मालूम है, मुद्दतों से मालूम है, 22 फैमिलीज थी पहले, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा ये इजाफा हुआ इनके अंदर. देयर इज अ क्रीमी लेयर which has got higher linkages with the bureaucracy, with the army, with the diplomatic corps, etc. There's a retired gentry who have no problems at all. They live in this typical white collared colonies, farmhouses हैं उनके, perhaps on the Lahore Peshawar road or whichever direction it is. ये सब तो है उनके पास. मगर इस सिचुएशन के अंदर I think even they have been affected. मैं आपको ये कह सकता हूँ अश्योरेंस के साथ दैट पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो ऑफिशियल उनके फिगर्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पेंशन्स एटसेट्रा, दे आर नॉट एज गुड एज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट पेज. इट इज व्हाट दे हैव गेन्ड underhand, which makes the difference for them, perhaps. Allowances, etc. और बहुतों के पास प्रॉपर्टीज है इंटरनेशनली, अब्रॉड चले गए होंगे बाहर, शायद बहुत से लोग निकल गए होंगे बाहर, hoping not to come back until the situation improves completely. So it's not entirely true to say that the cake eating gentry has been completely untouched. I think is the way काफी इनके ऊपर असर पड़ा है. Yeah. Sir Anikesh says, what even is Pakistani nationalism? Is it Islam? Is it Punjabi supremacy? Is it anti-Indian sentiments? What exactly is that after all, even 75 years, there's no concrete Pakistani identity? Yes, statement
है डिबेटेबल मगर इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। 71 से पहले कहते हैं हम और ईस्ट पाकिस्तान को देखते तो ऑब्वियसली देन दैट वुड बीन अ क्या वेरी स्टोरीज डिफरेंट है, हाँ जी। सिचुएशन। मगर आज बाय एंड लार्ज मैं पाकिस्तानी से मिलता हूं, कभी पाकिस्तानी से बातचीत होती है, कभी कभी चैट भी होती है इधर उधर, वन ग्लीन्स फ्रॉम देम, yes, Islam is a very strong binding factor. But I have to admit that Islam is a very strong binding factor. Magar Islam could not keep East Pakistan and West Pakistan together. या या That we have to remember. Culturally, देखो ये cultural linkages जो होते हैं, they are stronger than religious linkages. या Anyway, and ethnic linkages, इसमें सब चीजें देखिए, ethnicity भी देखिए, कल्चरल भी देखिए, कास्ट बेस्ड भी देखिए, हमें दुनिया भर की चीजें इसमें देखी जाती। But I think cultural is very, very important. The affinity within a region, ethnically, people together. You will no one will put national agenda first in Pakistan. Islamiyat will be there, then the cultural linkages will be there. Cultural linkages will be there, then Islamiyat, and then the aspect of nationalism. I think in that order they'll probably आई थिंक take it. दिस इज वन लेसन सर, अगर पाकिस्तानी को अगर ये पता चल गया, एक्चुअली ऊपर किसी को पता चल गया यार ये रियलिटी है, दैट विल बी अ हैप्पी रियलाइजेशन डे फॉर देम, Hmm. बिकॉज Yes. जो इनका जो सोच है कि यार हर चीज में इस्लाम ये वो कर कुरा के दे कीप अ सर्टेन सेक्ट टुगेदर, बट दैट कुडंट कीप देम टुगेदर इन 71, इट Absolutely, जस्ट absolutely. नहीं हुआ वो। They were, I mean, you see, East Pakistan was culturally so different, Yeah. linguistically so different, ethnically so different. But within Pakistan itself, except the fact that there is a commonality of borders between the states, etc. But आप देखें हाँ, तो Sindh with Punjab is completely different. ठीक है, Sindh with POK is completely different. Pakistan occupied Kashmir is completely different. बलोच तो अलग ही But हैं। a sense of culture binds them together as states, and then the Islam angle comes in together, and then nationalism joins the whole thing together. So to dismember this, what happens is that the moment a threat is perceived to the larger land of Pakistan, perhaps, then nationalism comes to the fore. In today's environment, nationalism comes to the fore, and that may be a truism for the moment, but there will be a point of no return, जहां पर ये समझते हैं कि देखिए पाकिस्तान के, आई मीन टू स्टे इनसाइड पाकिस्तान, यू आर गेटिंग नो बेनिफिट। या मुहाजिर हैं, सिंधी हैं, बहुत से बलूच हैं, वो सडनली परसीव कि हमको फायदा क्या मिल रहा है इसका। हमारे लैंड से आप बलूच में देखिए, अगर 14% ऑफ द पॉपुलेशन, 40% ऑफ द लैंड मैस, और फिर मिनरल रिसोर्सेज देखिए, the majority of the mineral resources of Pakistan are from Balochistan itself. So you have to build a larger understanding. अब उसी चीज को अगर भारत में देखें, food production in certain states is very high. Tea production is high in some other states. ठीक है, फ्रूट प्रोडक्शन, अब नासिक को देखिए आप, फ्रूट बेल्ट है भारत की, कम, मगर दैट इज नॉट द बेल्ट टू प्रोड्यूस अदर ग्रेन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तमिलनाडु, पंजाब, हाई इन प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो एवरीवन इज गॉट हिज कोर एरिया, राइट? एंड देयर इज अ, आई मीन द होल थिंग हैज बीन इंटीग्रेटेड मार्वेलसली टुगेदर as a part of the Indian Union. ये चीज पाकिस्तान में मिसिंग है अभी तक। पीपल स्टिल कॉल फॉर मी माई सेल्फ, मेरी चीज पहले, फिर मैं देखता हूं देश को, फिर मैं देखता हूं देश को। भारत में आई थिंक वी हैव लार्जली ओवरकम दैट प्रॉब्लम। आई मीन सी पर्टिकुलरली द इंटीग्रेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टुडे, कितनी बढ़िया तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत के साथ जुड़ा है। वो चीज जो है पाकिस्तान में नहीं नजर आती है। True, sir. Thank you, Mr. OO, for your contribution and your question. Army or civilians? They are both. They both belong to the same society. Can the army or anyone else bring the much needed change in the mindset?
जी, माइंडसेट के अंदर अगर कोई चेंज आर्मी ला सकती है तो वो है अनुशासन, डिसिप्लिन. You see, army works to a particular discipline, but it cannot impose that. uh, जियाउल हक के वक्त जो है एक डिसिप्लिन इम्पोज करने की कोशिश की गई थी बहुत हद तक, ठीक है, बट देर इज अ बैकलैश. नॉर्मली यू कांट ट्रीट अ डिस्ट्रिक्ट like a unit, like an infantry unit. You can't start treating a state like an infantry division. I'm going to handle it in this particular manner, right? There is much more of a human give and take in this. तो आर्मी की का तरीका, तौर तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है. और जब खास तौर पे आर्मी आती है रूल करने के लिए, तो इनके तौर तरीके जो होते हैं कुछ अलग होते हैं, हमारे जो होते हैं कुछ अलग होते हैं, which are not all easily acceptable to civil society. That creates a lot of, इनके बीच में बहुत जो है क्लैशेस होते हैं इसकी वजह से. Yeah. Don't you think balkanized Pakistan will be more beneficial to the US, which will give them bases and will be under complete control because smaller nations and weak will be more in need of US aid? इसी को आप उल्टी तरफ से देख लीजिए. कमजोर देश वहां पर, yes, and all of them in need of a lot of aid, but at the same time internally unstable, right? And mostly under influence of radical elements. And Islam, radical Islam, you know how easily it has spread all over in these areas. And if the United States fears anything, it is the spread of this ideology into these areas, Central Asia in particular. Central Asia is 6 states or 5 states actually. अब आप देख लीजिए 4-5 स्टेट और बढ़ जाए अगर पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर अगर वॉरलॉर्डिज्म हो गया तो अफगानिस्तान के अंदर, तो बिटवीन द साउथ ऑफ रशिया एंड द इंडियन ओशन यू मे हैव 20 स्टेट्स. अब आप देखिए ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर अनगवर्नेबल स्पेसेस हैं आज, जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, सेंट्रल एशियन ग्रुप्स, हिजबुल तहरीर एंड अल-कायदा, दैश, आइसिस, ये सब वहां बैठे हैं नॉर्दर्न अफगानिस्तान के अंदर. जो मैं कहता हूं तो फिर ना नेक्स्ट साइकिल ऑफ टेरर जो है वो वहीं से शुरू होगा. वो जरूर शुरू होगा अगर आपने 20 स्टेट्स यहां पर आ दी तो जरूर होगा. सो इजी टू बी एबल फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इनटू दीज स्मॉलर स्टेट्स, वीकर स्टेट्स. पर अगर आपकी एंटिटी अच्छी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, गवर्नेबल, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, नॉट करप्ट, इन कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, साथ साथ मिलकर काम करना, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, that becomes so much simpler to provide security to that area. There is also a concern, sir, that says that जब पाकिस्तान के पास पैसा आता है तो हमारे जवानों पर हमले बढ़े जाते हैं. ये बात मैंने नहीं सुनी है, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग अगर ऑब्जर्वेशन है कि जब पाकिस्तान आर्मी के पास आ जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है शायद उनका, और वो सोचते हैं इसके बारे में कि लेट अस टेक इट अक्रॉस टू द सीज फायर लाइन इन, और रादर द एलओसी इन कश्मीर. ये नई चीज आप बता रहे हैं मुझको, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. I mean, what I think उनका जो सर, ये जो जिन्होंने कमेंट लिखा है उनका ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर पाकिस्तान वीक रहेगा तो इंटरनल लुकिंग रहेगा, थोड़ा सा स्टेबल होता है फिर वो बाहर देखना शुरू हो जाता है मैं क्या करूं. बात तो सही है, ये बात सही है. So that's कि स्टेबल पाकिस्तान जो हमारा कहने का मतलब ये है, स्टेबल पाकिस्तान अंडर कंट्रोल. आई विल नॉट से स्टेबल पाकिस्तान एंड इन द हैंड्स ऑफ Pakistan army and ruled by the Tehreek Taliban Pakistan. No, nothing of the sort. Stable Pakistan, responsible Pakistan, right? It has to be made responsible to its own people. It has to be made responsible to the future generations. It cannot treat conflict as a means to resolving issues, problems with your neighbors, etc. That is the kind of responsibility that you look at, and that's the kind of nation that you look at. That can only happen if Pakistan is stable. So this is what one seeks, and this is what the international community seeks. You create an unstable Pakistan,
and the spiral of this activity will never end. ये चलता रहेगा पूरे वक्त. एक Yeah. जनरेशन आएगा, दूसरा जनरेशन आएगा. I mean, this will keep happening all the time. I mean, I don't think the West speaks of it openly, sir, but Pakistan has had a hand in जितने बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हुए हैं, you can trace it back to Pakistan some way or the other. So Mostly, we talk about the introduction of radical theology, radical ideology as a weapon system. You see, when it started in 1977, 80, when Ziaul Haq brought this into Pakistan, the intent was primarily, first of all, to be more Islamic than any other Islamic nation. This is what Pakistan's dream has always been: be the flag bearer of Islam. We are the nation which were created on the name and basis of Islam. That's what they claim. That's what Pakistan always claims, right? Very good. But if you're a benign, good nation which is doing good to its people, etc., and not at loggerheads with its neighbors, fine, then go about promoting your religion, promoting your faith and everything. But if that is going to bring you to conflict with everyone else, then that's not the best way to do things. That's the way it should be looked at. I mean, it's a paradise, if I mean, and I'm going to take 3 to 5 minutes more of yours. So I just want to address 2, 3 questions here, and then we can bring an end to this beautiful show. Of course, I'm sure a lot of the people would want to go on, but this is a see again the I want to appreciate again the audience as well, and of course you, sir, that we've kept the conversation at a certain level that would be acceptable to someone from the other side of the border as well. I want to keep it constructive. Yeah, there are loads of people who can point and shoot at Pakistan. Uh, the reason I want to keep it constructive is even the constructive criticism to tell them that, listen, you guys have been morons all your history should be done properly. I don't really want to say that, and I apologize for using that word, but I just wanted to communicate that particular sentiment that it has to be done properly. A criticism has to be with facts and figures, not shot in the air. And I appreciate everyone for keeping it that way. So, ask: is there any chance for this? Is a hypothetical, of course, but it's Pakistan. So, is there any chance for Imran Khan to come back to power and then automatically the army will collapse? Uh, Please get an opinion from General Sir on the above. See, we are already hearing this morning's news. I've been reading on the net this morning that the United States is in touch with the Imran Khan's party, Tehreek-e-Insaf, and there's a change. Appears to be a change of heart in the Yeah, in Imran Khan's party. They're no longer looking at Pakistan, looking at the United States with that degree of negativity. I don't know how these ideologies keep changing overnight. Because something which I'm born with, I tend to continue believing in it unless something very drastic happens. What is drastic happening in Pakistan is obviously Pakistan is failing as a state. So that's why perhaps Imran Khan's party is also changing its way of looking at the United States. It also mm, knows that the IMF is controlled, all these international institutions are majorly controlled by the United States. yeah, And there is no way that they can get past any of these loans, etc., unless the United States gives us not, right? So obviously, Imran Khan is expecting that things will fall apart, right? Shehbaz Sharif is, I mean, it's a matter of time, and by the time it will come to the next elections in 4, 5, 6 months from now, the situation would be so negative that it would be inevitable that they would be seeking a change. And indicators from the media do tend to say that show that Imran Khan's party is popular, is getting more and more same. popular, Yeah, right? And this time Imran Khan may be different. He may decide to look at this whole issue differently. He may look at it to play ball with the United States and the Western world. I think Pakistan has by and large cut its linkages with Russia for the moment, at the moment at least. It's gone whole hog in supporting in Ukraine, has provided ammunition, has provided how many containers of missiles and things like that. So obviously all this is expected to come to the fore in terms of support coming back from the United States to Pakistan. I do think that if an election is held and Imran Khan wins the election,
then he will have the support of the United States, and you may find this is one way in which some stabilization may take place. You may find it a different Imran Khan. I do still believe that Imran Khan is very artificially radicalized. After all, a guy from Oxford, a guy who's been playing international cricket, who's won the World Cup for Pakistan, etc. I mean, to get him to be completely radicalized, I think it's more for convenience than anything else. And Yeah. for convenience, he'll probably switch back to being non-radicalized, right? Perhaps if that happens, it will be a positive thing. But the Pakistan Army and Imran Khan's relationship is something which is going to remain questionable. Because I think they went a little too far with this relationship, negativity of this relationship, and forcing the DGISI and the DGISPR to come make public statements against Imran Khan and things like that. I don't think all that is going to be forgotten in a hurry. So yes, Imran Khan has got all the chances of returning to power, right? My last comment on this aspect is I think the golden opportunity in Indo Pak relations was when Shehbaz Sharif made this statement that we can set aside conflict and things like that, we can do business and things like that. And why was it necessary for his own office to start tweeting out immediately to saying that this is all preconditional to Kashmir being resolved? What's the point of doing this? I mean, let the chief executive have some leeway, and if nothing else, 10, 12, 15 years of good economic relations between India, a most favored nation status being given to India, etc., transit facilities given to India to move to Afghanistan and to Central Asia. To India, that is the kind of thing they are looking for in terms of economics. But cussedness, and this is what my appeal to the people of Pakistan is. ये आपकी cussedness क्यों इतने बीच में आती है? आप अपने आप के बारे में क्यों नहीं सोचते हो कि आप ही के लिए अच्छा है? आपकी लीडरशिप आपके बारे में क्यों नहीं सोचती है? सर In वो fact, उसके लिए ना, the media should write. The media should be writing more on this and telling the leadership कि भाई time is coming, enough is enough in Kashmir. आप नेगेटिविटी करते रहिए, इस तरह की एनिमोसिटी करते रहिए हर वक्त, ठीक है, मगर लेट्स गेट ऑन विद आवर रिलेशनशिप. आपको आई थिंक यू विल नीड 2 words of regret to say कि जो कश्मीर में हुआ उसको भूल जाइए. आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोबेबली एक्सेप्ट दैट as saying that yes, we were responsible for terror and we will not follow terror any longer. Then you can start having talks with each other. But terror and talks, no, they will not go together. which brings me to this particular comment, and I'll leave you to analyze it for yourself, sir, because we feel both Pak and Indian Army doing what British Army doing during colonial time. नहीं, ये रफीक अहमद साहब को इसकी समझ नहीं है कुछ ज्यादा. पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे उस वक्त, ठीक है. हम कॉलोनियल मास्टर्स के लिए काम करते थे और आर्मीज को कोई छूट नहीं थी उस वक्त. आप कूडेटा नहीं कर सकते ब्रिटेन के खिलाफ. अभी जो है, अभी आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकते हैं. इंडिया में तो बात दूसरी है. मगर तो प्लीज आप इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी को मत कंपेयर करिए और हमको एक ही पेंट ब्रश से मत पेंट करिए, क्योंकि हम बिल्कुल ही अलग हैं. इंडियन आर्मी जो है ना, बिल्कुल ही अलग है. वी हैव नो indicators within our characteristics to say that we are similar to the Pakistan. जी. Second last one, sir, 1111. Thank you so much once again. He says Pak hypocrisy is so disgusting that one hand Bajwa wanted to make good with Israel in return for dollars. On the other hand, he wanted to do tamasha about Palestinian solidarity. Which brings me to a certain point, sir. आपने एक चीज hint करी थी कि that they should grow up and get a brain. 70 साल से सर जिनके घोट दिया है सब कुछ दिमाग के अंदर, उसको ठीक करने के लिए कम से कम नहीं तो बोलते हैं हाफ लाइफ
30 से 35 साल तो चाहिए होंगे सर. अभी तो आई वोंट इवन काउंट वन डे गॉन. So the expectancy that they would actually grow a brain and look the right direction. कोई एक इमरान खान आके बोलना भी शुरू कर दे, he starts speaking the right language, यार okay we'll forget कश्मीर, उसको मार देंगे सर ये तो उठा के. देखिए, ये मैं पाकिस्तान के निवासियों के लिए कहता हूं ज्यादा, याद रखिए, आपकी आर्मी ने पिछले 70 साल में हर दफे कुछ ना कुछ शुरुआत ऐसी की है जो नेगेटिव रही है, और बिना सोचे कि ये नेगेटिव शुरुआत जो है ये पाकिस्तान को के लिए फायदा कैसे करेगी। आप देख लीजिए, 47-48 में लश्कर भेजे, किस उम्मीद में कि भारत की फौज को उस वक्त लश्कर हराएंगे कश्मीर के अंदर घुसकर, और कुछ नहीं। 65 में देख लीजिए आप, लड़ाई किस लिए लड़ाई शुरू करी 65 में, पहले मई के महीने में वहां भुज में अपना गुजरात के अंदर, और उसके बाद अगस्त के महीने में कश्मीर में, इस उम्मीद में कि इससे पहले कि पाकिस्तान भारत की फौज जो है ज्यादा मजबूत ना हो जाए, हम कश्मीर पर चढ़ जाते हैं, कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करेंगे। अभी किस दुनिया में आप रह रहे हैं। उसके बाद आप इकहत्तर पे आ जाइए, ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया आपने ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को मारना, जेनोसाइड कंडक्ट करना, ओके हम सफाया कर देंगे ईस्ट पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स का, और उसके बाद हम छाए रहेंगे यहां पर। ये कहीं दुनिया में हुआ है कभी? कैन यू कंट्रोल अ कंट्री थ्रू जेनोसाइड? वो देख लीजिए आप, 89 में देख लीजिए आप, फिर शुरुआत की आपने कश्मीरी पंडितों को एक्सटर्मिनेट करने की, ये सब चीजें की। कारगिल में रिवेंज फॉर सियाचिन आपने कोशिश की कि हम छा जाएंगे श्रीनगर, जोजिला, ले एक्सेस के ऊपर, और भारत की फौज जो है सियाचिन को स्टॉक नहीं कर पाएगी और वहां से उसको हटना पड़ेगा। अरे मतलब क्या बचपना है ये। मुशर्रफ साहब की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहां थी? मतलब एक बच्चा भी उनको कह सकता था कि भाई भारत की फौज अगर आप उनके इलाके में चढ़ जाएंगे वेकेटेड पोस्ट पे, तो वो आकर आपसे मतलब अगले 15 साल तक लड़ेंगे, सुसाइडल वो कर देंगे आपके ऊपर। क्या भारत की फौज बैठेगी चूड़ियां पहनकर वहां पर? तो ये दिस इरेशनैलिटी जो है ना पाकिस्तान आर्मी की खास तौर पे, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इशू टू क्लोज ऑन आदि, कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान साइकी, पाकिस्तान आर्मी की साइकी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स आवर डिस्कशन सो अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि हम दुनिया की हर चीज को रैशनलाइज करेंगे यहां पर, और आखिर में जो है पाकिस्तान आर्मी सब कुछ इरेशनल चीज करेगी जिससे तहलका मचेगा, हारेगी खुद मगर तहलका तो मच जाए। The problem वही है sir, and I want to just take this one comment where I want to put in a bit, just a sentence. Adi, you should be open to both points of view of Pakistan. It's your view that Pakistan will not break, but you should consider also that the other view that it will break. Jai Bharat, Jai Punjab. I promise you, I will do a show on this. Let us study this aspect. Let us see if we can build something on this. And I'm open to criticism. So if I'm sitting in front of you here, Adi, that's this how is it called is. scenario building, दिस इज कॉल्ड सिनेरियो We बिल्डिंग। will we will और try ये and वॉर see. गेमिंग में, वॉर गेमिंग का एक तरीका होता है, हाँ जी. बोथ साइड्स आर सीन, ठीक है। जो हमने इस वक्त किया वाज नॉट वॉर गेमिंग, वाज नॉट दिस थिंग एट ऑल। हमने इसको रियलिटी में देखा, हाँ जी. रियलिटी के साथ देखा। जो आपको सजेशन दिया जा रहा है थ्रू योर द थिंग्स व्हिच आर कमिंग, स्क्रोल्स व्हिच आर कमिंग टू यू, इज टू सी बोथ साइड्स irrespective of the rationale, ठीक We'll है। do that. both sides as a scenario building, which is what you should do। सिनेरियो बिल्डिंग भी करना चाहिए। मैंने आपके लिए जो किया है वो है a rationalizing of the situation, and I've come to the conclusion that I think brinkmanship तक चलेगा ये, मगर उसके आगे नहीं। Sir, thank you so much. This has been fantastic. I've kept you for a long time. But you know, I am appreciative to all the audience. More than we had about 250 people at a time. I'm appreciative to everybody for their point of view. And देखो ऐसा है, the discussion तभी होता है जब दो तरह के point of view हो.
अगर आपका और हमारा सब चीज में अग्रीमेंट है तो उसमें डिस्कशन नहीं होगा फिर। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ नाइस डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, वे वी डिस्कस थिंग्स एंड वी ब्रिंग देम आउट इनटू द ओपन। यही चीज पाकिस्तान में ओपनली आप कर नहीं सकते हैं। या यू डू सी सम यूट्यूब चैनल जहां पर वो थोड़ा बहुत इधर उधर बोल लेते हैं, बट उनके बारे में हमको पूरा पता नहीं है, सो आई वोंट वांट टू टेक इट फर्दर देन दैट। सर, to you, it's always a pleasure talking to you, learning from you, and the aspect of realism is something that needs to be brought into Indian strategic discussion, जो आज आप लेके आए हैं, because the problem is that हम लोग कभी कभार इमोशनल हो जाते हैं, and with all due reason, sir, Pulwama, I'm just naming a few, Mumbai, Absolutely, absolutely. Mumbai train blasts, Parliament, and I was there in Mumbai during the hotel attacks and the train blast. I was in a train by the way when the train blast happened. So we do get emotional about it when we see these soldiers and people who die and stuff like that. I can understand the sentiment that people are coming from, and I respect that. But we need to still see realism because geopolitics is all about that. For that, sir, always wonderful talking to you. शुक्रिया to your audience on both sides of the border. खुश रहिए. जय हिंद. Jai Hind, sir.